Welcome all of you. Myself, Dr. Ashish Khan Chaudhary. Today's my presentation topic is New Tribal Venture Promotion. It is related to Module 9, Lecture number 2. In previous lecture, we know that about meaning, concept, importance and benefit of the New Tribal Venture Promotion. And last point is covered market analysis of tribal venture promotion. In that slides, we know there are the three important points, that is competitor analysis, target audience and strategic plan. Those are helpful for the market analysis. Next slide is business model of tribal venture promotion. ट्राइबल वेंचर का प्रमोशन क्यों किया जाए या एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल डेवलप करने के लिए हम सभी को किन इम्पॉर्टेंस एलिमेंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट इज जो इम्पॉर्टेंट है, अगर एक बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल डेवलप करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखा जाए। जो स्थानीय सामाजिक आर्थिक प्रमोशन के लिए हेल्पफुल हैं उनको बिजनेस मॉडल में विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस मॉडल सक्सेस हो सकता है। सेकेंड पॉइंट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस मॉडल बिकॉज cooperative society is helpful for the development of the, and it is also helpful for the new venture promotion, because without cooperative society it is not possible to develop or promote your venture in local communities. And next is very helpful and very important point, that is institutional support, because without finance it is not possible to develop your business model in tribal ventures. And last is product and services development. किसी भी वेंचर प्रमोशन का प्रोग्रेस तभी हो सकता है जब उस प्रोडक्ट का सर्विस डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो, उसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, कोई ना कोई तुरंत वहाँ पर पहुँच जाए जिससे कि वहाँ का डेवलपमेंट या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इट इज आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर द बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग स्टेबिलिटी. इट इज आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर द एनी बिजनेस मॉडल ऑफ ट्राइबल वेंचर प्रमोशन. इट कैन, इन अदर वर्ड्स वी कैन से ए बिजनेस मॉडल फॉर ए ट्राइबल वेंचर इन्वॉल्व considering the unique context and need of the community, those ensuring the sustainability and profitability. First point is revenue streams. Why we develop tribal venture promotion? क्यों हम किसी tribal venture promotion को develop करें? We know that money is most important part. Revenue streams कैसे हम develop कर सकते हैं? Revenue. First point is cultural tourism. Offer guided tour, workshop and experience that showcase tribal culture, tribal traditions and tribal heritage. Artificial product या craftsmanship products. Sell handmade craft, artwork, traditional goods with the help of the online, with the help of the local market or with the help of the partnership with their retailers. Ecotourism. Ecotourism is also helpful in revenue streams because utilize tribal land for sustainable nature retreat or outdoor activities such as hiking, bird watching or wildlife tour. Tribal events. It is also organized in cultural festival or performance for both tribal members and visitors, charging for ticket or different sponsorship. Those are helpful for the revenue streams. Caste structure. It is also very helpful on the basis of the
cultural preservation on the basis of the infrastructure development, on the basis of the marketing and promotion, because allocate fund for language revitalization programs, cultural education initiative and heritage conservation efforts. Invest in different maintaining and developing infrastructure for the tourism, such as visitor centers, such as accommodation facilities and transportation development. This type of the cost structure is very important for the business model of tribal venture promotion. Marketing and promotion. Budget for marketing campaigning, budget for website maintenance, budget for promotional material to attract visitors and customers for the important part of the determination of business model of tribal venture promotion. Staffing. Staffing means recruitment of the employee. It is covered different types salaries of for guides, salaries for administrative staff, salary and other employee involved in running the ventures. Sustainable practices. Implement eco-friendly initiative and responsible tourism practices, which may include waste management, renewable energy and conservation factor. These points are very helpful for the determination of the cost structure. First is cultural preservation, second is infrastructure, after that marketing and promotion, staffing, sustainable practices. These are the important points in cost structure. Distribution channel. How we distribute our product in market scenario, in different markets. How we promote our product in market. So distribution channel is an important part for the business model of tribal venture promotion. It is also divided in different parts, such as online platform. We utilize e-commerce platform to sell tribal products, offer booking for tours or accommodation and provide different information about tribal experience. Local market is a good channel for the distribution channel because it has established a partnership with the local market, boutique or souvenir shop to sell tribal craft and products or tribal made different unique piece. Tourism agencies. With the collaboration of different travel agencies or tour operators to include tribal experience in their field, in their areas with package and different attractive offers. Direct sales and social media, it is also good distribution channels. Those are helpful for the business model of tribal venture promotion. Next and last point is partnership and collaboration. For the government agencies with the non-profit organization or different educational institution, we can make partnership and collaboration. We promote our business model for tribal venture promotion because these are the very good channel to aware about business model in mainstreams. Local businessmen, tribal networks. Tribal networks mean there are the different tribal NGOs, different tribal agencies. Those are establish a connection and collaborate with other tribal communities both within and outside the region for exchange of cultural and solidarity mutual support. By focusing on these elements, a tribal venture can create a sustainable business model that not only generate revenue but also preserve and promote tribal culture and heritage for future generation. Market strategy for tribal venture promotion. Which type of strategy are helpful are developing a reboost to marketing strategy for the tribal venture promotions. Regarding this, these are the following important approaches. Those are helpful for the
tribal venture promotion. Branding. Brand is an important part for the marketing strategy because brand has a unique culture, brand has a unique ID, and it has a heritage of the tribes in your branding. Ensure that your brand reflect the value, reflect the tradition and reflect the storytelling of the indigenous community. And it is also connect with your audience emotionally and foster a deeper understanding of ट्राइबल कल्चर. अगर आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग स्ट्रेटजी का प्रयोग करते हुए ट्राइबल वेंचर को प्रमोशन करना है तो उनकी जो कल्चरल हेरिटेज है, उनका जो हिस्टोरिकल बिलीफ एंड वैल्यू है, उसको आपको मेन मार्केट के साथ अटैच करना रहेगा और अपने ब्रांड को मार्केट में ऐसा प्रमोट करना रहेगा कि ट्राइबल कम्युनिटी के स्टोरी को उस ब्रांड से रिफ्लेक्शन मिले, लोगों में एक अट्रैक्शन की भावना आए जिससे कि उस प्रोडक्ट के बारे में जानने का प्रयास करें. विद द हेल्प ऑफ द विजुअल आइडेंटिटी, बिकॉज इट इज ए आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इंडिकेट ट्राइबल कम्युनिटीज कल्चरल हेरिटेज एंड कल्चरल his story or her story. Digital marketing efforts. It is also important for the marketing strategy. Website is a good channel for the digital marketing because it is create a professional website that serve as a central hub for the information about tribal venture, including details about tours, accommodations, products, cultural experience and other reservations option. Those are helpful for the marketing. Social media is also good digital marketing efforts because social media platform such as Instagram, Facebook and Twitter, it has a showcase, indicate visual content, share stories and engage with your audience. Use hashtag, use other social media option and user generated content to your reach and foster community interaction. Content marketing is also part of digital marketing efforts. It is also produce high quality content such as blog post, articles, video and podcast, educate, entertain and inspire your audience. It is also focus on topic related to tribal culture, related to tribal tradition, related to sustainable tourism and local experience. Email marketing is also part of digital marketing efforts. Build a email list of interested subscribers and regular communicate with them through newsletters, updates and special different offers. Community engagement initiative is very popular marketing strategy for tribal venture promotion. With the help of the local partnership, with the help of the community events, with the help of the different educational programs like workshop, like cultural experience for schools, universities and communities groups, engage participants in hands-on learning activities that deepen their appreciation for tribal culture and heritage. Last is events and promotions. It is also important point for the marketing strategy of tribal venture promotion. Especially for the marketing strategy, invite special events, promotion throughout the year such as cultural festival, art exhibition or seasonal celebrations. Create memorable experience that attract visitors and encourage repeat business. Package deal is a good part for the events and promotions. In package deals, create package deals for different offers that combine various products and services
such as guided tour, accommodation and workshop. Offer different discounts is also helpful for the events and promotions in marketing strategy for the tribal venture promotions. Social impact of tribal venture promotion. How the venture benefit the tribal communities. Social venture promotion, सोशल इम्पैक्ट का ट्राइबल वेंचर प्रमोशन में क्या इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है या उनको किस तरह का फायदा हो रहा है जिससे कि हम ट्राइबल वेंचर्स को प्रमोट करें. फर्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. अगर ट्राइबल वेंचर प्रमोशन हम करते हैं तो उसका सोशल इम्पैक्ट ये पड़ता है कि सोसाइटी एक जस्टिफाई वे में ले जाती है जिसके कारण रोजगार के अवसरों का बढ़ना होता है, जिससे कि नए नए रोजगार मिलते हैं. इससे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और साथ ही साथ दूसरे क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलता है जिससे कि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है. सामाजिक समानता का बढ़ना. इट इज आल्सो जनरेट स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन सोसाइटी. सामाजिक समानता बढ़ती है जिससे जनजातियों के बीच में सामाजिक समानता का जो गैप था वो धीरे धीरे कम होता है और उनमें अपने समाज में समानता का एहसास होता है जिससे वह समाज के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य रूप से जीने का अवसर प्रदान करते हैं या उनको अवसर मिलता है जिससे वो मेन स्ट्रीम के साथ में रहने को धीरे धीरे सीखने लगते हैं. अर्थव्यवस्था का भी विकास होता है. अगर हम ट्राइबल वेंचर का प्रमोशन करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है जिसके कारण लोकल इकोनॉमी विशेष रूप से डेवलप होती है. इससे उस रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत तेजी से सुधार होता है और उनके ओवरऑल ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. इट इज आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर द पॉपुलेशन कंट्रोल. विद द ट्राइबल वेंचर प्रमोशन दे नो अबाउट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, they know about the family planning, they know how we utilize our finance in different social welfare activities, जिसके कारण हमको पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प मिलता है. साथ ही साथ इट इज आल्सो हेल्पफुल कल्चरल प्रिजर्वेशन. विद द ट्राइबल वेंचर प्रमोशन इफ वी इंक्रीज सोसाइटी they can preserve cultural heritage. Financial projection of the tribal venture promotion. ट्राइबल वेंचर प्रमोशन के लिए वित्त फाइनेंस के बारे में एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द फाइनेंस. देयर आर द डिफरेंट पॉइंट्स: रेवेन्यू फोरकास्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस, प्रॉफिट मार्जिन्स, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट. दीज आर द important point for the any tribal venture promotion regarding to the finance, because we know that financial projection for a tribal venture promotion involve estimating future revenue. It is also determine break even point. It is also analyze profit margin and identifying investment requirement. Those are very helpful for the financial projection because with the help of the break even analysis point, which is the level of needed to cover your total cost and achieve a net income of zero. Identify your fixed cost. Fixed cost means rent, salaries and utilities. Variable cost like material, marketing expenses. It is associated with running the tribal venture. Use the contribution margin ratio, it means CM ratio, to determine the proportion of revenue that contribution to covering fixed cost. Divide your total fixed cost by the CM ratio to find the break even point in terms of the revenue. Profit margin, it is also very simple. Calculate your gross profit margin, which is the percentage of revenue remaining after deducting the cost of goods sold. That is also known COGS. Determine your operating margin, which is the percentage of revenue remaining after
deducting both COGS and operating expenses. Monitor and analyze profit margin regularly to assess the profitability and efficiency of your tribal venture. In last, identify opportunity to optimize cost, improve pricing strategy, or diversify revenue streams to increase profit margin over time. And last, fourth point is investment requirement. Estimate the initial investment required to launch your tribal venture, including cost for infrastructure development, marketing expenses, inventory purchases, and staffing. By conducting through financial projection, you can assess the feasibility and profitability of your tribal venture promotion, identify potential risk and opportunity, and make informed decision to achieve sustainable growth and success. Roadmap and milestone of tribal venture promotion. It is very important to developing a roadmap and defining key milestones. These are the essential for guiding the tribal venture promotion effectively. Here are some approaches to create a roadmap including key milestones and have a timeline and strategy for achieving objective of tribal venture promotions. हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी ट्राइबल वेंचर प्रमोशन को प्रमोट करने के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमको उस सोसाइटी का अध्ययन करना पड़ेगा जिस सोसाइटी में आपको ट्राइबल वेंचर का प्रमोशन करना है, और उस सोसाइटी का अध्ययन करने के बाद वहाँ का प्रेजेंट सिचुएशन, सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर एंड एंटरप्रेन्योरियल पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे हमको ट्राइबल वेंचर प्रमोशन ध्यान देना पड़ेगा। और ये चारों पॉइंट्स, प्रेजेंट स्टेटस, सोशल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस एंड एंटरप्रेन्योरियल पोटेंशियल, इनको आइडेंटिफाई करने के बाद हमको उस सोसाइटी का अध्ययन करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे हमको ट्राइबल वेंचर प्रमोशन के बारे में सोचना पड़ेगा जिससे कि आपका ट्राइबल वेंचर प्रमोशन एक माइलस्टोन बने। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टाइम लाइन्स। शॉर्ट टर्म गोल्स में आपको 1 मंथ से लेके 12 मंथ तक का एक प्लान बनाना पड़ेगा कि हमको किस महीने में क्या काम करना पड़ेगा। जैसे शॉर्ट टर्म गोल्स में फर्स्ट 3 मंथ्स में वी कैन जनरेट या आर एस्टेब्लिश द वेंचर लीगल स्ट्रक्चर, obtain necessary permit, license and security funding. Also during 3 months, we develop branding, storytelling and marketing material. Build partnership with local businessmen, organizations and community leaders. Next 3 months, that is very helpful. Launch the venture websites and social media platform. Initiate marketing campaigning to promote tribal experience and products. Beginning offering guided tours, workshop. Next 3 months, it is important to host community events, cultural celebration or educational program, and also collect feedback from customers and stakeholders to refine offering and services, and also analyze, evaluate the effectiveness of marketing strategy and adjust it as needed. Next month, it means 10, 11, 12 month. Analyze financial performance and adjust budget and projection accordingly. After that, expand offering based on demand and market trends. Also analyze strength relationship with partners and stakeholders for long-term collaboration. It is a good plan for the short-term ventures. For the long-term ventures, there are try to develop your goal in different parts like 2-3 years, like 4 to 5 years, or
behind 5 years more. So it is your responsibility to develop your timelines regarding your tribal ventures goals. Short term, or it is also very important to try develop your objective in short term objective and लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। यानी ये हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ट्राइबल वेंचर प्रमोशन माइलस्टोन वे में तभी हो सकता है जब उस वेंचर के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल डिटरमाइन हो, जब उस वेंचर का ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बेसिस पे डिफाइन हो। टीम फॉर द ट्राइबल वेंचर प्रमोशन, कौन आपकी टीम में कार्य करेगा? इट इज एंटरप्रेन्योर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफाइन एवरीथिंग, हु इज अकाउंटेबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल, everything is defined in because there is no lack of any information. So first point, introduce the core team members. It is entrepreneur's responsibility who is core team members introduce with his specialization, with his expertise, with his roles and commitment to the ventures and the communities. ये एंटरप्रेन्योर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उनकी टीम है, टीम को मार्केट के सामने लाया जा, उनके एक्सपर्टीज को बताया जा, उनका इस वेंचर में क्या रोल है उसको बताया जाए और उनका कमिटमेंट वेंचर्स के लिए क्या है, कम्युनिटी के लिए क्या है, इन दोनों चीज़ों को बताया जाए ताकि टाइम वेंचर के प्रमोशन में जो प्रोडक्ट या जो इंटरप्राइज लाया जा रहा है उसकी वैल्यू और बिलीफ पर लोगों का ध्यान जाए। सस्टेनेबिलिटी एंड कन्वर्सेशन फैक्टर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द टाइम वेंचर प्रमोशन। For the long-term sustainability and conservation, it is assured that your venture protects sustainability. It is helpful for the environmental protect. It is helpful for the different natural resources. ये हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जाए तो वो सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करे, साथ ही साथ एनवायरमेंटल इनिशिएटिव जो कार्य गवर्नमेंट करना चाहती है उन सारे कार्य को ट्राइबल वेंचर्स में एक स्पेशल जगह दिया जाए और वो सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करें। इन अदर वर्ड्स वी कैन से incorporating sustainability and conservation efforts into the tribal venture promotion is essential for preserving the natural environment and cultural heritage of the tribal lands. It is our responsibility to reduce the different waste management related problems. It is our responsibility increase energy efficiency in different technological or renewable sources, implement water saving measures such as low flow fixtures, rain water harvesting and landscaping to minimize water usage. Biodiversity conservation, protect and restore native these type conversations. Conclusion, our topic is new tribal venture promotion. As we move forward, it is essential to continue supporting and investing in tribal venture, recognize their invaluable contribution to inclusive growth and sustainable development. Together, by embracing indigenous entrepreneurship and innovation, we can create a more equitable and future for all. So, हम ये कह सकते हैं और ये बताते हुए हमको अच्छा लग रहा है कि हमने एक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में ट्राइबल वेंचर प्रमोशन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है और हम सभी लोग इसका उपयोग करके विभिन्न जनजातियों को एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी की ओर अग्रसर कर सकते हैं
और जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का मेन पर्पज है समाज के उत्थान, समाज के विकास के लिए, उसमें हम सभी लोग सहयोग करेंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि ट्राइबल वेंचर प्रमोशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए। डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल हैं जो कि हमको ये बताते हैं कि हम उनको आने वाले समय में अगर वहाँ पे जाके देखें, बाय नर्चरिंग इंडिजिनियस एंटरप्रेन्योरशिप वी पेव द वे फॉर सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ cultural heritage. Moreover, tribal venture promotion foster a sense of pride, sense of dignity and ownership among communities members, leading to sustainable development, etc. Thank you.